ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेक्चर नंबर 1। व्हाट इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन? इट कैन बी यूज्ड, ज्योमेट्रिक distribution can be used to model the number of trials up to and including the first success in an infinite number of independent trials. That means के ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो बेस करता है ना, वो ये करता है कि आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं और तब तक ये चलता रहेगा जब तक आपके पास पहला सक्सेस नहीं आ जाता इन्फिनाइट उस पे। एग्जाम्पल, a six-sided fair dice. A six-sided fair dice. Now, a six-sided fair dice will be thrown where you will be knowing that 6 आने की probability है 1/6 और 6 ना आने की probability है 5/6। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास 6 आने की probability आ गई 1/6, जो क्या हो जाएगा, लेट से प्रोबेबिलिटी मेरे पास गिवन है, इसको हम पी के प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के फॉर्म में हम इसको नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्यू क्या हो जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 5/6 है तो क्यू बेसिकली हो जाएगा 1 माइनस पी। क्यू बेसिकली क्या हो जाएगा 1 माइनस पी। अगर मैं 1 माइनस 1/6 भी करता हूं तो आई एंड अप हैविंग व्हाट 5/6। इसी उसको अगर मैं बेस करूं किस फॉर्म, तो क्या मतलब हुआ था इसका, ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड टू मॉडल द नंबर ऑफ ट्रायल्स अप टू एंड इंक्लूडेड द फर्स्ट सक्सेस इन एन इनफिनाइट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रोबेबिलिटी इसकी कि मेरे पास 6 आ जाए और ये किसकी है 6 ना आए, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 और नीचे क्या हो जाएगा 5/6। पर अगर 6 आ गया तो यहां तक सही हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली बारी में ही मेरे पास चीज आ गई, राइट। बट यहां से अगर 6 नहीं आता तो मैंने क्या बोला कि आप तब तक करते रहोगे जब तक आपके पास सक्सेस का ट्रायल ना आ जाए। वो एक दफा भी आ जाएगा तो आपके लिए वहां तक जिंदगी आसान होगी। दैट मीन्स 6 आपके पास जो नहीं आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 है, तो इसके बाद मैं दोबारा से इस पॉइंट से करूंगा, क्योंकि 6 नहीं आएगा मैं एक दफा फिर ट्राई करूंगा कि मेरे पास 6 आए या फिर 6 ना आए। अगर 6 आ जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 और इसकी जो प्रोबेबिलिटी 6 ना आने की हो जाएगी 5/6। दोबारा, अब मेरे पास सक्सेस क्या था 6 आने का, तो 6 तो आ गया सेकंड उसमें भी, पर सेकंड उसमें 6 ना भी आ सकता है। तो अगर नहीं आएगा मैं फर्दर कंटिन्यू करूंगा, इसको फर्दर कंटिन्यू करूंगा कहाँ पे 6 आए और 6 ना आए। अगर 6 आ जाता है तो ये हो जाएगा 1/6 और 6 ना आए तो क्या हो जाएगा 5/6। दोबारा से आप नोट करें कि अगर मेरे पास 6 आ जाता है तो वहां तक बस हो गई, बट अगर 6 ना आए तो क्या हो जाएगा, मैं दोबारा कंटिन्यू करूंगा और उसको क्या ढूंढूंगा, 6 आ जाए या फिर 6 ना आए।
अगर 6 आ जाता है तो यहाँ पे दोबारा ठीक हो गया भाई, जो कि हो जाएगा 1/6। पर अगर 6 ना आए तो क्या हो जाएगा? 5/6। सिमिलरली अगर मैं आपको दोबारा बोलूं कि भाई ठीक है, यहां से आप नोट करें कि यहां से भी अगर 6 आए और 6 ना आए, अगर 6 यहाँ आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6, और ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/6। तो बेसिकली आपकी ये प्रोबेबिलिटी तब तक चलती रहेगी जब तक आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ना आ जाए। आपकी क्या ना आए? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ना आए। दैट मीन्स कि अगर मैं इसी चीज को बोलूं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट ट्रायल, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी 6 ऑन फर्स्ट ट्रायल, तो ये तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्रायल में क्या हो जाएगा? 1/6 ही आएगा इसका आंसर, क्योंकि डायरेक्टली मेरे पास ये आ गया, राइट। पर मैं बोलता हूं कि भाई ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट 6 ऑन सेकेंड ट्रायल, 6 ऑन सेकेंड ट्रायल का क्या मतलब हुआ? कि पहली ट्रायल में क्यू आ जाएगा और दूसरी ट्रायल में पी आ जाएगा। क्यू आने का मतलब क्या हो जाएगा? इस वैल्यू के हिसाब से तो मेरे पास 5/6, पर नॉर्मल वैल्यू के हिसाब से 1 - p, और फिर p आ गया, which means 5/6 and 1/6. So this becomes what? 5 upon what? 36. यही चीज अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी 6 ऑन थर्ड ट्रायल, 6 ऑन थर्ड ट्रायल, तो 6 ऑन थर्ड ट्रायल क्या हो जाएगा? मेरे पास आ जाएगा क्यू, क्यू और पी। पहले उसमें ऑब्वियसली सक्सेस नहीं होगा, दूसरे उसमें सक्सेस नहीं होगा, तो तीसरे उसमें क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली 1 - p, फिर 1 - p एंड देन p। इसको हम 1 - p होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और फिर p लिख सकते हैं, क्योंकि दो ट्रायल के ऊपर मेरे पास क्या आया? मेरे पास नहीं आया, पर ऑब्वियसली थर्ड ट्रायल के अंदर आ गया। अब देखो, समहाउ यू आर गेटिंग बाइनोमियल वाला शेप, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यू आर गेटिंग बाइनोमियल वाला शेप, जिसमें हम पावर्स आ जाती है उसमें, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/6 टू द पावर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। अच्छा, मूविंग फर्दर, ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5/6 टू द पावर, दैट मीन्स दिस शुड बी 25/216। सिमिलरली इसी चीज को मैं बोलूं कि मेरे पास P जो है वो आ जाए 6 ऑन फोर्थ ट्रायल। क्या चाहिए? 6 ऑन फोर्थ ट्रायल। फोर्थ ट्रायल का मतलब क्या हुआ? पहले क्यू आएगा, दूसरा भी क्या आएगा, तीसरा भी क्या आएगा, फिर क्या आ जाएगा? अच्छा, क्यू आने का मतलब क्या होता है? 1 - p। बट वो क्यू कितनी दफा है? तो क्या हो जाएगा वो? क्यूब। और दूसरा क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, विच मीन्स 5/6 टू द पावर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा? 1/6, जो नॉर्मली गिवन है। तो 5/6 इंटू 1/6 विल बिकम व्हाट? 125/1296। अच्छा जी, अब कुछ जरा चीजों को दूसरे लेवल पे ले चलते हैं इनके। द डिस्ट्रीब्यूशन एक्स, द डिस्ट्रीब्यूशन एक्स, ठीक है जी, द नंबर ऑफ ट्रायल्स up to and including the first success in a series of repeated
independent trials. This is a discrete random variable. Discrete random variable. Considering this, whose distribution is called geometric. That means everything what you do in geometric distribution will be part of discrete random variable. Everything in discrete random variable, it was noted that few things were there. That means that there were possibilities of having more than one success, right? But here you might end up having more failures and then an initial success. That means you will only be dealing with what? You will be only with dealing with all the failures and then one success. तो क्या मतलब हुआ, जब तक आपके पास एक सक्सेस नहीं हो जाती तब तक आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे. देन the probability distribution table of nth trial is repeated as, let's say we are making down the probability distribution table where the first thing was R, and here we used to write down probability of X. Let's say 1, 2, 3, 4, 5. So for each term, if you note, this was for the first term, this was P. This was P. Then for the second term, this was 1 minus P multiplied by P. 1 minus P multiplied by P. For the other term was 1 minus P whole square multiplied by what? P. 1 minus P cube multiplied by P. 1 minus P to the power 4 multiplied by P. Which means for the nth term, this should be 1 minus P n minus 1, because obviously there is one term that is being less. If the term is 5, then the power will be 4. If the term is 4, then the power will be 3. If the term is 3, then the power will be 2. 1 minus P n minus 1 to the power n minus 1 multiplied by what? P. So that means the nth term formula becomes 1 minus P to the power n minus 1 multiplied by what? P. And 1 minus P will give me what? Probability of failure. Now, this table represents the values of geometric progression with A is equal to P. With A is equal to what? P. The first value of the term will be P. Obviously, term 1 will be P. Whereas your R will be 1 minus P, which is equal to Q. Whereas your R will be 1 minus P equal to Q. The sum of all probability is equal to 1.
So sum of infinity is equal to 1. Sum of infinity is equal to 1, because now generally the same table can be used as was geometrical progression, because in geometrical progression what we used to have was Tn is equal to a r, right, and n minus 1, a r n minus 1, where a becomes the p because the first value is p, whereas this term r becomes what, 1 minus p, which is equal to what, q. Similarly, summation of, let's say, probability which is x is equal to r will be sum of infinity. So that means a upon 1 minus r, which is noted as p, is 1 minus q, which can be noted as p 1 minus p, which is all equal to what? 1. That means a upon 1 minus r. Sum of infinity formula was what? A upon 1 minus r. Now a is taken as what? P, and r is taken as q. So q can be written as 1 minus p as well. But whatever we do, the sum of infinity was equal to what? 1. That means now sum of the probability will also be equal to 1. So that means that now there is a certain quotient, the certain formula that will be used as according to the sum of infinity, which is a upon 1 minus r, will be taken considered as p upon 1 minus q, which will be equal to what? 1. That means if you have probability of success, you can easily take out probability of failure. If you have probability of failure, you can easily take out probability of success. But that will be through what? P upon 1 minus q, which is will be equal to what? 1. Because the sum of the infinity is now equal to the sum of the entire probability, that is always equal to what? 1. Okay. Now, need to understand a discrete random variable x is said to have geometric distribution. Said to have what? Geometric distribution. And is defined by its parameter p if it meets following criteria. Number 1, repeated trials are independent. Repeated trials are independent. Number 2, repeated trials can be infinite in numbers. Number 3, two possible outcomes. Two possible outcomes for each trial. Number 4, the probability of success, the probability of success the probability of success is same then
x is geometrical, written as what? T. That means when you'll be writing this, you'll write it as x geometrical. If I take this following example, this should be 1/6. That means probability of success will be taken into consideration. So this is your normal